slide now. दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही को इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। Give a community strike. Okay, I'm going to live just 1 second. हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टोवेल के फ्रेश एमए के अंदर। और आज हम दोस्तों यहाँ पे करने वाले हैं एमए कोम्युनिटास का। बेसिकली आपको नहीं पता है कोम्युनिटास क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक डिसेंट्रलाइज टायरलेस लॉन्चपैड है जो कि पॉलीगन के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पावर्ड है पॉलीगन पे, जहाँ पे कि आपको सबसे कम फीस लगती है और इसके अंदर आप बिना किसी एक मिनिमम अमाउंट के भी यहाँ पे लॉन्चपैड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी के जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए मैंने यहाँ पे आज 2 गेस्ट को इनवाइट करा है। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे रॉबी, जो कि बेसिकली इस प्रोजेक्ट के हैं BDM यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, और साथ ही हमारे पास है यहाँ पे कमर जी, जो कि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी मैनेजर हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स के बारे में और देखते हैं कि आखिरकार कोम्युनिटास हमें क्या क्या एडवांटेजेस यहाँ पे ऑफर करता है इस लॉन्चपैड के द्वारा। एंड साथ ही दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे गिव अवे भी है। तो टोटल यहाँ पे 5 लोगों को गिव अवे मिलने वाला है वर्थ ऑफ $20 ईच यहाँ पे कॉम्युनिटास टोकन का। तो आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं इस एमए के द्वारा, वो हम लास्ट में वीडियो की पिकअप करेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप यहाँ पे हैशटैग का यूज़ करें, #KOM, और उसके आगे आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर रॉबी का। हाय मिस्टर रॉबी, हाउ आर यू? Hello, Pranjal and audience. I'm good, thank you. Okay, so can you please describe about the Kommunitas and yourself? Yeah, sure. Yeah, good evening, everyone. My name is Robbie, and I'm currently my role here is as business development for Kommunitas. Yeah, here, so I'm in charge of all business-related aspects, such as, but not limited to, marketing, partnership, and also exchange listing. So, for my background, I came from a businessman with 10-year plus experience in the business field, and I have been investing in cryptocurrency since 2017. So what I can say here is that the cryptocurrency and the blockchain world is just like any other business, but we are lucky enough that we know cryptocurrency now because this is still at its early stage, you know? Yes. Yeah. So कमर जी, कैसे हैं आप? आपके बारे में आप थोड़ा इंट्रोडक्शन बता सकते हैं, कैसे आप इसको मैनेज करते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं? गुड इवनिंग प्रंजल जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और मैं अपने बारे में सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम कमर रिजवानी है सर, और मैं कम्युनिटास के साथ में कम्युनिटास की जो हिंदी कम्युनिटी है उसको मैं मैनेज करता हूं, और उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी सर अपडेट्स आती हैं वो सारी अपडेट्स को हिंदी कम्युनिटी के साथ में कम्युनिकेट करना, और उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको, जो हिंदी अपनी जितने लोग हैं, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, उनकी सहायता के लिए जो है मैं उनको फैसिलिटेट करता हूं। और सर मेरा बेसिकली मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किया हुआ है। क्रिप्टो में मैं करीब जो है 7 ईयर्स से हूँ, और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इससे पहले भी था। तो मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी एक रही है सारी कुछ। और कम्युनिटास से अभी मैंने चूंकि इसका पोटेंशियल देख के अटैच हुआ, अभी आगे जाके हम इसके बारे में और बात करेंगे सर। थैंक यू जी, शुक्रिया रॉबी एंड शुक्रिया कमर जी। सो हम लोग ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस निकाले अबाउट द कम्युनिटास, तो हम उसको फिर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों को कम्युनिटास के बारे में थोड़ा पता पड़े कि प्रोजेक्ट क्या है, कैसे वर्क करता है इस पॉइंट पे। सो रॉबी, वी हैव सिलेक्टेड सम क्वेश्चंस अबाउट द कम्युनिटास, सो वी विल स्टार्ट बाय द फर्स्ट क्वेश्चन। सो कैन यू ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द कम्युनिटास, व्हाट इज द एग्जैक्टली प्रोजेक्ट इज देयर? Yeah. So Kommunitas is a decentralized and tierless launchpad. For tierless here, meaning that we don't have any level or any tier, you know. So Kommunitas is also the solution for multi-chain oriented projects and being the bridge to a new organic way of fundraising across the blockchain. Kommunitas levels the playing field by enabling the developer or a team of developers to launch their project
crypto project on Kommunitas platform, and they can collect Ethereum, BNB, Hecto, or Matic, or any other cryptocurrency that will be supported by our platform. Kommunitas currently supports only Matic mainnet or Polygon token, as we are our COM token is created on Matic mainnet as MRC20 token. However, our platform will also add another popular chain like Binance Smart Chain, Huobi Chain, and other chain as our part of our growth strategy. And for that Binance Smart Chain, we are almost near to adding the Binance Smart Chain. Okay. And I can tell you that the Kommunitas was inspired by the original word of community, which comes from the Latin word communitas, or it means the same. So therefore, Kommunitas is a community which share the same vision and goal to get a capital gain in this cryptocurrency space. ओके, Thank you. थैंक यू वेरी मच रॉबी। एंड बेसिकली बहुत सारे लोग हमारे पे हिंदी में ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो कमर जी हमें इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी यहाँ पे दे देंगे। तो कमर जी प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको हिंदी में, ताकि जो हिंदी ऑडियंस ज़्यादा समझती है वो यहाँ पे समझ पाए प्रॉपरली। जी बिल्कुल प्रांजल जी। देखिए, कम्युनिटास के बारे में अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जैसे भी रॉबी सर ने भी बताया कि एक कम्युनिटी जो लैटिन वर्ड है उसमें से इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है कम्युनिटी, जिसका मेन मीनिंग है कि सेम। अच्छा, कम्युनिटास का जो सबसे मेन एस्पेक्ट है वो ये है कि इसमें इस प्रोजेक्ट के थ्रू इन लोगों ने सारे प्रोजेक्ट्स जो जैसे जिनके पास में जो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होते थे, टायर सिस्टम होता था, तो सारे यूजर्स उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी सर बाइनेंस स्मार्ट चेन और दूसरा जैसे पैनकेक स्वैप वगैरह पे अपन कोई भी टोकन लेते हैं तो सीधा जाके स्वैप कर लिए, इजीली हो गया। लेकिन जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च पैड पे आते हैं उनमें तरह तरह की मुसीबतें होती है पब्लिक को टोकन खरीदने के लिए। टायर सिस्टम होता है, या वाइट लिस्टिंग होती है, या कुछ ना कुछ उसमें रहता है, या कभी होता है कि मिनिमम इतना बाय करना है। तो वो सारी चीजों को हटा के कम्युनिटास का जो मेन ब्यूटी है कम्युनिटास की, वो ये है कि वो ये सारी चीजों को हटाता है। टायर सिस्टम नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज ये तरह तरह की ब्लॉक चेन्स को सपोर्ट करता है। फिलहाल तो MRC20 टोकन है, लेकिन वो बाद में जैसे सर ने बताया है कि BNB, हिकोम और इथेरियम वगैरह पे भी उसको इंटीग्रेट करने वाले। और तीसरी चीज ये हो गई कि ये डिफरेंट फंड रेजिंग के लिए हेल्प करता है इस तरीके से। थैंक यू सर। ओके, बहुत बढ़िया लगा सर। प्लेटफॉर्म अच्छा खासा है कि क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा मेजर जो ब्लॉक था वो यही था कि उसमें पहले डिपॉजिट करना, उसके बाद फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ हटने का एक बहुत अच्छा एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है। Okay, so Robbie, we will move to a next question. What is the difference, or we can say that what is the competitive advantage of Kommunitas as compared to other projects, like any other project like BSC Pet or something? For the benefits of Kommunitas. Means what the difference between on them? Oh, okay. For what makes Kommunitas like different from Yes. other launchpad, right? So yeah, okay. Currently, what we can see is that there are several problems with current launchpad. Is that I don't know whether I'm okay to say some name, but like BSC Pad or Forecast Starter, if you guys know this launchpad, they have this like the first thing is they have this tier system, you know, where people must hold or purchase a minimum number of their token to get the allocation for the newly launched project. As far as I know, this project they need like we need to own or hold like 1,000 to 2,000 worth of their token, and I believe that not everybody of us can go into this cryptocurrency space and be able to purchase this 1,000 or 2,000 worth of their token, you know. So this is one problem. The second problem with current launchpad is some launchpad has this queuing system, you know, where normally only 10% of the people can get allocation for newly launched project. We take this from, let's say, if you know CoinList. CoinList is also a launchpad. Yes. I've been into a situation, and this is my personal experience when I want to get into the CoinList. You know, there are 300,000 people who wants to purchase some token, newly launched token, but only 10% out of the 300,000, which is 30,000,
is able to purchase the token. I was waiting for like 4 hours, but I get no allocation. So I think this is also another problem. The third problem that some launchpad has this whitelist system, where you fill up the form and they will say that if you are whitelisted or you are not whitelisted. So and what I can see here is there is a lack of transparency. We don't know how they whitelist the people. So this is the third problem. And also some problem only have one currency acceptance. Let's say they can only accept BNB, or they can only accept Ethereum. And also some launchpad, they have project to launch in their platform, but without audits, no audits, and without the help to do the marketing for the project. So these are all the 5 problems that Kommunitas is trying to solve here. Thank you. ओके कमर जी। यस सर। सर रॉबी सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि डिफरेंस क्या है कम्युनिटास और अदर जो लॉन्च पैड्स हैं। जी। वो सारी चीजें सर ने कवर कर ली। मैं उसको बहुत शॉर्ट में समराइज कर दूं सर। कम्युनिटास प्रोजेक्ट का जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि सर इसमें यूजर्स जो हम जैसे बायर्स हैं, या जैसे कोई भी जो बायर कम्युनिटी है जो उसको बाय कर रही है, तो उनके लिए ये है कि उनको टायर सिस्टम से उनको ये एडवांटेज हो जाता है कि मिनिमम अलोकेशन में उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जितना वो चाहे बाय कर सके। बिल्कुल। अच्छा, उसी तरीके से इधर की जो पार्टी होगी, यानी जो प्रोजेक्ट लॉन्चर्स हैं, जो प्रोजेक्ट अपने लॉन्च कर रहे हैं, उनकी भी कुछ समस्याएं होती है, जिनमें सबसे मेन समस्या ये होती है सर कि क्यूइंग सिस्टम होता है कि जब यानी कई सारे उसमें नंबर सीरीज होती है, अगर वो है तो उनमें अगर उसमें चांस मिला तो ही होता है। फिर वाइट लिस्टिंग सिस्टम होता है। इससे पहले भी सर मैंने बताया कि वाइट लिस्टिंग में ये होता है कि समझिए 50,000 है तो उनमें से पता चला 20,000 ही उसमें चांस मिल पाया, उन्हीं को टोकन बाय करने का मौका मिल पाया। तीसरी चीज ये हो जाती है कि कभी कभी करेंसी, अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट देख रहा था मैं, जिसको सिर्फ बीएनबी में खरीदा जा सकता था सर। ओके। तो ये हो जाता है। अब किसी के पास बीएनबी नहीं है, या वो जहाँ पे भी उनका लॉन्च पैड हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कि सर वो अपनी ही वेबसाइट पे करते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं कि, तो अब वो अगर बीएनबी नहीं है, या अगर है तो कभी कभी भेजने में दिक्कत हो जाती है कि भाई नहीं, उस पर सेंड करने में दिक्कत हो रही है, मेरे इसमें पड़े हुए, मेरे बाइनांस में या मेरे वजीर एक्स में है, मुझे सेंड करने में इतना फीस। तो यहाँ पे ये सारी चीजों को खत्म करके अलग अलग करेंसी में अलाउ करना, और दूसरी चीज व्हाइट लिस्टिंग को हटा देना और क्यूइंग सिस्टम को भी हटा देना, ये फैसिलिटेट करता है बायर्स को, और प्रोजेक्ट लॉन्चर्स को भी एक इजी हो जाता है कि यहाँ पे हम लॉन्च करेंगे तो हमारे टोकन्स को इजीली एक मार्केट मिल जाएगी। बिल्कुल, मतलब ऑल राउंड ऑल टोकन के हिसाब से मार्केट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जी सर, जी सर, जी सर। यानी सर अपने अगर देसी स्टाइल में अगर इसको बोलेंगे तो एक ऐसी ओपन सी मार्केट, जैसे अपने इंडिया में जो मार्केट होती है, यानी ये कोई लॉन्च पैड्स में सर आप जाके देखेंगे ना, तो काफी उनका एक अजीब सा एक डेकोरेटिव और एक अजीब सा स्टाइल होता है लॉन्च पैड्स पे। जी। यानी उसमें छोटे अमाउंट से इंटर होना या वो कुछ टोकन्स में वो करना इजी पॉसिबल नहीं होता है जी बहुत सारे बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स में। अगर प्रोजेक्ट अच्छे हैं, लेजिट हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है। तो वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और ये सर मेन चीज है कि पॉलीगॉन मैटिक को अगर आप पहले से भी देखे होंगे तो इनमें ट्रांजैक्शन को लेके या दूसरी चीजों को लेके बहुत, यानी ये सारी चीजों को बहुत कंसीडर करती है पॉलीगॉन नेटवर्क, और हम उसी के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल सर। तो ये अच्छा है कि सबके लिए एक बिना जो एंट्री बैरियर था वो यहाँ पे खत्म हो गया और डायरेक्टली कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, और वो भी अलग अलग ब्लॉकचेन से, मतलब अगर कोई भी टोकन है तो वो उसके ऊपर आराम से पार्टिसिपेट कर पाएगा। जी सर। ओके। सर इसको मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज करता हूँ, फिर हम आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट इसके लिए थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ।
ओके, आई थिंक अब विजिबल हो गया होगा वापस से। जी जी। एक बार मैं भी इसको चेक कर लेता हूँ। So will the YouTube link be the same, Yes, or it will be a yes, new yes, one? it will be the Okay. same. We are just Okay. continue there, and it's just a little pause in them. Okay, so now it's Okay. working. Okay, got it. So, Mr. Robbie, let's move to the next question. So, what are the major benefit, or we can say that the advantage, if any project will be launched on a Kommunitas? So okay, yeah. Like we explained, so Kommunitas will play as a one-stop solution for a project that wants to launch on our platform. Yeah, Kommunitas will have the project in terms of marketing campaign from social media influencer or KOL to news and media coverage. And the second thing is Kommunitas will also have the project to get audited, for its smart contract, because it is, in our opinion, it is quite important for a project to get audited. The third, From which form? uh, yeah, Audited. audited. We have one company which is for the audit company. It's called the Cell Boxes. Okay. So for the project who wants to get listed with us, we want the project to get audited first before we can launch the project. Okay, so the third benefit, if let's say we see and we feel that the project has some potential, then Kommunitas will also provide some grant to the project. Okay. And after raising some funds, Kommunitas will help the project in terms of listing to the centralized exchange and decentralized exchange. And we feel that this is also another important thing, because many projects nowadays, after they do the pre-sale or private sale, then the project gone with all the team, and they don't continue the project. We don't want this to happen in our platform. So So actually, yeah, there you are are some providing the backend support also, the team to just got listed on the centralized exchanges and all things. Yes, because to get listed on centralized exchange, a project needs to have some legal opinion and incorporation of the company. We can provide some advice on that. And also, there are many scammers in terms of centralized exchange. People will come to the project and say that they are from Upbeat, they are from Bitam, or they are from Get.io, and if you don't know the legit representation from that particular centralized exchange, then you can be scammed by the people, because they can do all these things like the email spoofing. They can send email from the company of Gate, from the company of Bitam or Upbeat, and you will just pay them and they will just vanish. Yes, you said that right. Yeah. Okay. So कमर जी, इसको भी हम लोग हिंदी में फिर कर लेते हैं. यस सर. सर जैसे भी रॉबी सर ने कहा ना सर, स्कैम अभी रिसेंटली, मैं एक नाम नहीं लूंगा प्रोजेक्ट का, उसका भी वो इनिशियल स्टेज है, मगर यही सेम प्रॉब्लम वहां पे भी मैंने देखा. ओके. ठीक है, सेम प्रॉब्लम. वो स्कैमर्स इतना ज्यादा, ये लिस्टिंग जो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग होती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, उनमें बहुत ज्यादा जो है स्कैमर्स जो है उसमें काफी है, हर जगह एक्टिव है, जो भी आप तो खुद ही जानते हैं सर. बिल्कुल. तो मेन क्या है कि कम्युनिटास की अब तक की अगर आप जर्नी देखें तो हम जो है 6-7 से ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं. इसके अलावा जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं सोहेल मसासी साहब, ओके. उन्होंने जो है इसको ऑडिट, सेकंड ऑडिट किया. पहली ऑडिट इसकी टेक रेट से थी, दूसरी उन्होंने की. और तीसरी चीज ये है कि ऑडिटिंग के लिए, प्रोजेक्ट की ऑडिटिंग के लिए कम्युनिटास हेल्प करेगा, मार्केटिंग में हेल्प करेगा, लिस्टिंग में हेल्प करेगा. तो ये प्रोजेक्ट को एक प्लस एडवांटेज मिल जाता है जो भी लॉन्च पैड पे आने वाले प्रोजेक्ट्स. ओके, दैट्स ग्रेट. अच्छा है कि आप अपनी तरफ से पूरा बैकएंड सपोर्ट भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं. जी सर. Okay, so let's move to the next question. Robbie, what are your future plan for the Kommunitas? Okay, so currently, recently we have just enabled our staking function on our platform. Okay. Our user who have Com token can now stake their Com token in our platform and earn
interesting 120% up to 120% APY. That means that it is almost 10% monthly, you know. Yes. So if let's say you have 1 million of COM token, then you can earn almost 100,000 of COM token monthly in our platform, staking in our platform. And so after this, we are going to focus on developing our tierless launchpad, you know, because it will be our main platform. Yes. And we also in talk with some Polygon project, and we think that by collaborating with other Polygon project, it will help us to get more exposure. Like now we are collaborating with Uniland, PlotX. We are collaborating with PlotX. We are going with QuickSwap, ApeSwap, Polycrystal. Yeah, this is our focus currently. We want to collaborate with as many projects as possible, and then after that, we are as stated in our roadmap, we are going to build the bridge to the Binance Smart Chain. So later on, people like Matic token or Polygon token has 3 chain: Matic in Matic mainnet, Matic in Ethereum, and Matic in Binance Smart Chain. We also want to do this kind of thing, so we want to build the bridge from Matic chain to Binance Smart Chain. Okay. So this is our future plan. That's great. And I think you have just updated your roadmap about Q4 2020 till Q4 2020. Yes, correct. We have updated the roadmap, and you guys can check it out at our docs.kommunitas.net/roadmap. So I will share the screen and show the people about the whole things. सो बेसिकली दोस्तों ये कम्युनिटास की वेबसाइट है जहाँ पे कि आप इनका APY यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 120% तक है, प्लस स्वैपिंग फीचर भी है। और यहाँ पे जैसे सर ने भी बताया, रॉबिन सर ने, कि यहाँ पर उनके पास बड़े बड़े आप कह सकते हैं पार्टनर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिलैंड, प्लॉटएक्स, स्विफ्ट, पोलराइज, इवन दैट आप अलग अलग मीडिया पे भी देख सकते हैं। एंड रोड मैप की अगर बात करें तो आप यहाँ पे docs.communitas पे आ सकते हैं, मैं भी शायद आपको ऊपर विजिबल हो रहा हूँ, जहाँ पे कि आप इसका रोड मैप चेक कर पाएंगे। और ये आपको ट्विटर पे भी मिल जाएगा, जैसे कि क्वार्टर 2021 से लेकर Q4 2022 तक का रोड मैप ऑलरेडी यहाँ पे अपडेटेड है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि पूरी जो प्लानिंग है वो ऑलरेडी यहाँ पे डन करी जा चुकी है। इवन दैट इसके अलावा एक यहाँ पे इवेंट भी आ रहा है जिसके अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, तो आप देख सकते हैं कम्युनिटास आपको देखने को मिलेगा पॉलीकॉन के अंदर। और साथ ही साथ जैसे एक्सचेंजेस की बात करी थी, तो अगर आप कॉइन गीको पे आते हैं तो कॉइन ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $0.012 के रेट पे। प्लस आप नीचे मार्केट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे क्विक स्वैप, डिवेस, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। प्लस XT के ऊपर भी जो कॉम टोकन है वो अभी यहाँ पे लिस्ट हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर XT के ऊपर भी ट्रेड यहाँ पे कर पाएंगे। एंड इसके साथ अगर हम लोग इसको टॉप 10 कह सकते हैं कि जो लॉन्च पैड है उनके साथ कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3rd नंबर पे हमें ये देखने को मिलता है, जिसका वॉल्यूम कहीं ना कहीं 830 मिलियन के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये है दोस्तों पूरा कम्युनिटास के बारे में, जहाँ पे कि आपको और ज़्यादा डिटेल मिलती है। बाकी हम समझते हैं कमर जी के साथ कि और हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो कमर जी आप शेयर कर सकते हैं चीज़ों को। सर सबसे मेन चीज़ जो है कम्युनिटास की अब तक की जर्नी में जो मैंने देखा, इनका जो एक है, अभी कुछ दोस्तों ने इसमें क्वेश्चन भी किया है कि है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ सर, कि कम्युनिटास CMC का एयर ड्रॉप भी हुआ था कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, ठीक है जी। और उसके बाद में काफी अप एंड डाउन्स आए प्रोजेक्ट्स की अब तक की जर्नी में। अब हर एक जर्नी में थोड़े अप एंड डाउन्स होते ही है सर। बाद में हमारे ट्विटर के साथ में भी थोड़ी वो हो गई थी ट्रेजिडी, लेकिन वो सारा कुछ जो है कम्युनिटास ने उसको हार्ड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वे में हर चीज का जो है सामना किया। अच्छा, एक चीज और हुई थी ट्विटर के ऊपर कि पॉलीगॉन का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उन्होंने कम्युनिटास की ट्वीट को रिट्वीट भी किया हुआ है जी, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाद में। ठीक सर। तो ये काफी यानी चूंकि क्या होता है कि डेली सर नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो ये जरूरी है कि आदमी इसमें फर्क करे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें जो है अगर आप अभी ये देखिए सेकंड इवेंट जो आया है पॉलीगॉन का, इसके सारे उसमें आप देखेंगे इसके पूरे इकोसिस्टम में वो सारे प्रोजेक्ट्स है जो मैटिक जो पॉलीगॉन के साथ में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, उनमें फिर से कम्युनिटास आया हुआ है। ये इवेंट अभी नेक्स्ट वीक में होने वाला है, जो हमने पॉलीकैप वाला भी देखा था जी, पॉलीकैप का जो देखा था पॉलीकॉन का। तो इसमें जी सर वो जो है पॉलीगॉन ने
उस इवेंट के बारे में ये कहा है कि ये इनका सबसे वर्ल्ड अब तक का सबसे बिगेस्ट इवेंट होगा। ओके और उसके बाकायदा $10 और $14 समथिंग, मुझे अभी क्लियर नहीं है, उतने उसके टिकट्स भी मिलने लगे हैं। वो ट्विटर पे उन लोगों ने ऑलरेडी डाला हुआ है। हाँ, मतलब तो पॉलीगन उसमें के भी साइट पे चेक कर सकते हैं सब लोग जाके। जी सर, जी सर। जी तो ये सारी चीजें जो है वो कम्युनिटास को ना दूसरे लॉन्च पैड से एक अलग, और ये एक मैटिक इकोसिस्टम, पॉलीगॉन के इकोसिस्टम से ज्यादा करीब करती हैं। और दूसरी इसकी सबसे खूबसूरती है कि दूसरे, जैसे अभी कहा गया है कि दूसरी ब्लॉकचेन पे जो ब्रिज बनाया जाएगा, तो उससे ये सारी चीज ये जो है सब जगह हो जाएगा ये। हाँ, सारी तो चेन एक बार हो और जाएंगी फिर। सारे चैन पे हो जाएगा। और जैसे फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर प्लान के बारे में सर, स्टैकिंग सिस्टम ऑलरेडी एक्टिव है, आपने भी उसको दिखाया, रॉबी सर ने भी बताया स्टैकिंग सिस्टम। दूसरी चीज ये है कि अभी जो बिल्कुल एकदम करीब जो चीज आ गई है वो है कि जो है कि टायरलेस लॉन्च पैड पे हमारा प्रोजेक्ट जो है हम उसको शो करें, यानी उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अभी आने वाली है। ओके तो ये समझ लें सर, ये अभी प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल एकदम बिल्कुल तरीके से बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो किसी न किसी आइडियो को अब ये लॉन्च करने वाला है। कोई नियरेस्ट आइडिया है आपका, जैसे कुछ फ्यूचर प्लानिंग में कि कौन सा आइडिया भी आ सकता है, कितने टाइम में आ सर सकता है? ऑलरेडी ये तो है सर, ये विदिन वन मंथ के अंदर ही कोई ना कोई न्यूज आएगी। लेकिन ये कौन सा होगा वो सिलेक्शन अभी डेवलपमेंट टीम कर रही है, क्योंकि कई सारे जो है रिक्वेस्ट आई हुई है। Yeah, okay. That's great, sir. So, Robbie, our next question is that what is the advantage, or we can say that the use cases of a COM token, because it's a important, it's a fuel for your Kommunitas project. Yeah, of course. Yeah, there are three main use case of COM token currently. So the first one is by holding COM token and by staking, then our COM token holder will be able to earn the interesting yield on our Kommunitas platform. Like I said, they can earn up to 120% in APY. And also, if you bring the COM token and you pair it with QuickSwap, Quick or Matic, and people can do the yield farming. You know, they can provide the liquidity in QuickSwap or ApeSwap, and they will earn a Quick or the Crystal. Everything is stated for the staking. Everything is stated in our docs. You know, docs.kommunitas.net/staking. You guys can go and check it. That is the first. The second one is when you do the staking in our platform, then you will have the right to get the vote for the future development of our future platform and also for the future project. When you stake in our platform, when you stake more than 3,000 COM token, then you will get one COM V token, COM voting token. This COM voting token, that like I said, will be used for the voting function, but the voting or governance function is not ready yet. And also for the third use case, when you stake in our platform, we will calculate the allocation of the newly launched project based on the total amount of COM that you stake. And for the detail of the calculation, you can go to our white paper and read it, or you can go to our FAQ in the docs. I think it's the number 19 question. We explain how we calculate how this tierless launchpad works, and we calculate the allocation there. So yes, these are the three main use cases of COM token. Okay, it's great use cases in them. So, Kamal ji. जी सर मेन कॉम टोकन होल्डर्स को सबसे पहली चीज जो होती है वो ये मिलती है कि उनको राइट टू वोट मिलता है फ्यूचर डेवलपमेंट में कम्युनिटास के जो भी प्रोजेक्ट्स न्यूली जो लॉन्च पैड पे आने वाले हैं उनमें जो है वोट करने का राइट मिलता है अगर वो कॉम टोकन होल्ड करते हैं। दूसरा एडवांटेज जो कॉम टोकन होल्डर को मिलता है वो ये होता है कि वो इंटरेस्टिंग यील्ड उसके ऊपर अर्न कर सकते हैं। स्टैकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। उसके अलावा जो है जैसे क्विक स्वैप के ऊपर जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करके भी वो क्विक या तो चाहे तो क्विक अर्न करें या तो चाहे तो कॉम अर्न करें। तो ये सारी चीज उनको मिलती है कॉम टोकन होल्डर्स को। और साथ ही साथ में ये होता है अभी
के कोम टोकन अगर स्टैक करे तो स्टैक करने के बाद में कोम वी टोकन ऑटोमेटिकली मिलता है, जिसको ट्रेड नहीं किया जा सकता, वो जस्ट सिंबॉलिक पर्पस के लिए है। कोम वी टोकन मिलने के बाद में उनको गारंटीड अलोकेशन मिलेगा जो न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट्स होंगे उसके अंदर। ओके, ये एक और एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है। जी सर। Okay, so let's come to the next question, Robbie. Do you have any plan for the token burn or let's say the buyback, so the investor and the people will attract to it, because the coin burn event will be help to we can say increase the prices of the token or make a community that yes, this token in a very limited edition. Yes. We have the plan to implement the, like you said, the buyback or the burning for the COM token. It's just that we don't think that the burning is appropriate after the genesis. Nowadays many projects, they mean like 100 million token, and the next day they said that they will burn 50% or 80% of it. We don't think that it is quite a good way of doing the burning. As for now, we have already two burning mechanisms. One is when you stake COM token in our staking function or a staking platform. Let's say you lock it for 30 days, okay? And if you take or if you unstake before 30 days, then your capital, your COM token will get 5% penalty. Will be deducted 5% of penalty, and Okay. this 5% of the penalty will be burned directly. So if you go to our Polygon scan and you type Kommunitas, our total supply is no more 40 billion. We have decreased like 200,000, and this 200,000 is burned automatically because people stake and they unstake it before the end date. This is the first one. So I share The that. second one, sure. Yeah, 1 minute. If you go to Polygon scan and you go to Yes, here is a let supply, because if we go on CoinGecko, so here is a 40 billion supply, but currently on a Polygon scan we have already near about 39.9 billion supply. Yes, it is because they automatically burn when people unstake in our platform. So it's like a fixed time period of staking. Yes, this staking is just like a lock staking in Binance. So Okay. if let's say you choose for 30 days, you cannot. If you want to unstake before the 30 days, then you will not get any rewards, and your capital will get deducted for 5% of penalty fees. Okay. Yeah, and also we also have our elite group. We call it elite group, where our user need to send any number of COM token to a specific address talking to our bot. And for this address, it will collect all the COM tokens sent by our user. And for all these COM tokens collected, we are going to burn this. So this is our second burning mechanism. We later on we will be collecting the transaction fees, like in the swapping or bridging function. Then from those fees or revenues, we will use several percentage to buy back the COM token and maybe burn them. Okay, so what's the exact percentage till you burn your total maximum supply is about 40 billion. So what's your plan to burn how much percentage of your total supply? Currently, we don't have any fixed plan yet, because we think like this 40 billion, it may look so many tokens, but then if we go along with the roadmap, we are going to bridge our token to many other blockchain like BSC, Heiko chain, and everything to get more community and exposure, right? So yeah, we don't have any fixed amount of percentage yet, but we will know along the way we go. Okay, thank you very much, Robbie, about the information. Kamarji, इसको. Yes sir. सर बर्निंग मैकेनिज्म में सबसे पहली चीज ये आ जाती है सर कि मेन क्या है, अभी बर्निंग भी एक खिलवाड़ जैसा हो गया है। बहुत सारे टोकन लाना, फिर उसके बाद में जो एक हाइप क्रिएट करने के लिए हम बर्निंग करने जा रहे हैं, ये डेट को इतनी करने जा रहे हैं। तो हमारा कैसा है, बर्निंग का जो प्लान कम्युनिटास का है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए है, जिसमें मेजरली 3 चीज़ों को रखा गया है। जिसमें पहली चीज़ ये है कि सर स्टैकिंग में अगर पहले
मैच्योरिटी की पीरियड आने से पहले अगर अनस्टैक कर लिए तो 5% फीस उधर कट गया, वो उसका जो है वो 5% जो कटा वो बर्निंग में चला जाएगा। बिल्कुल। बहुत जगह बहुत सा ऐसा होता है यूजर्स के साथ में, लोग स्टैक करते बाद में मन बदल जाता है, अनस्टैक करने पे आ जाते हैं, तो वहां पे वो सारा उधर से एक अमाउंट आ रहा है बर्निंग के लिए। दूसरी चीज ये होगी सर कि स्वैपिंग तो होगी ही बाद में, जैसे ही आईडीओज आएंगे तो स्वैपिंग वगैरह और ब्रिजिंग आने के बाद में स्वैपिंग, उसकी जो ट्रांजैक्शन फीस वगैरह जो भी कलेक्ट होगी वो सारी बर्निंग में जाएगी। ओके। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये हो गई सर कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट ग्रो करेगा, इसकी कम्युनिटी भी ग्रो कर रही है। हमारा ऑलरेडी इलाइट ग्रुप कुछ ऑलरेडी रनिंग में है, तो उसमें उसका हिस्सा बनने के लिए जो कि डेवलपमेंट्स की सारी चीजें हैं, उनको जो एक अर्ली न्यूज मिलती है, एक इलाइट मेंबरशिप है समझ लें, तो उसमें जो है ज्वाइनिंग के लिए जो है कुछ कॉम टोकन्स जो है वो एक एड्रेस पे भेजने होते हैं। वो एड्रेस पे जितने भी कॉम टोकन्स कलेक्ट होंगे वो ज्यादा नहीं होते, यूजर अपने हिसाब से भेज सकते हैं, वो कलेक्टेड टोकन्स भी बर्निंग में चले जाते हैं। ये भी एक लॉन्ग वे प्रोसेस है। तो इसका कुछ डॉलर वाइज भी फिक्स है अमाउंट या फिर नॉर्मली? सर अभी तो फिक्सिंग का ऐसा कोई डेवलपमेंट टीम की तरफ से आया नहीं है कि Okay. कहाँ तक लेके जाना है। जी सर। ओके ऐसा फ्यूचर में कुछ होगा तो अनाउंस किया जाएगा। ओके। सो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर बर्निंग प्रोसेस को एक कह सकते हैं कि लाइफ उसके साथ कर रहे हैं तो लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को रन करा जा सकता है, और इससे वो भी नहीं रहेगा कि एक हाइप जैसा है, ये नॉर्मल सा है कि अब जितना अनस्टिक करोगे उतना आपका बर्न यहाँ पे कर दिया जाएगा, उसका 5% के आसपास में। जी सर। Okay, so Ravi, we will come on a next question. Every project has a story behind that, how it's great and all things. So, what's your vision for the Kommunitas? What's the story behind that, and what's your vision to which you want to achieve in Kommunitas? Yeah, like I mentioned at the first, like Kommunitas is built based on our experience that when we want to get into a launch pad like the SC pad or Volta starter, we do not have enough capital to purchase the minimum amount of token to be eligible for the allocation of the newly launched token there. It is like 1,000 or 2,000 in US dollar, and that's why we believe that not everybody who go into this crypto space, they will have that 1,000 or $2,000 for only the native token. After that, they will need to buy again the newly launched token. And we also have got into a situation where, like I said, where we wish to purchase a token in CoinList, but only 10% of the queue get a chance to purchase. There were 300,000 people, but only 30,000 people can be able to purchase. So it was 4 hours waiting in line, but our effort comes to vain. We got nothing, you know. And another problem is when we try to whitelisted ourselves in some IDO platform, we never get whitelisted. Maybe because what we want to buy is the amount of money that we want to buy is only a little. So yeah, this is how the Kommunitas build. We want to build a tierless launchpad. So no queuing, no tier, and no whitelisting. This is what Kommunitas wants to achieve. Okay, it's a great thing where user can just come and just participate in any idea which they want. Yeah. So Kanwar ji. जी सर। सर पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये चीज कवर मैंने थोड़ा सा इस बारे में बोला था सर कि मेन चीज ये होती है कि यूजर्स को जो प्रॉब्लम होती है कि वो उनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, अदरवाइज वो लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनको वेट करना पड़ता है कि वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज सेंट्रलाइज पे या डिसेंट्रलाइज पे कहीं ना कहीं टोकन आए तो फिर वहां पे बाय करेंगे। लेकिन ये तो हर कोई जानता है कि लॉन्च पैड पे जो प्राइस होता है या वो प्राइस फिर कभी मिलता नहीं है आगे फ्यूचर में। बिल्कुल। तो अब उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत से लोगों को दिक्कत आ जाती है कि भाई हम $800, कोई 600, कोई $1,000 तक का, उससे कम का नहीं बाय कर सकते। तो वो जो एक हैक्टिक चीज थी उस चीज को हमने खत्म किया यहाँ पे। ओके। क्योंकि वही चीज हमेशा आती थी कि भाई ये तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, ये तो बहुत से क्रिप्टो से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये थी सर कि जो अगर होता भी था तो फिर वाइट लिस्टिंग होती थी
या क्यूइंग का सिस्टम होता था, तो उसमें ये होता था कि प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन का मौका सबको नहीं मिल पाता था। वाइट लिस्टिंग का भी प्रोसीजर कभी कभी ऐसा टफ होता था कि ये ईमेल करना है, वो फिर वो प्रोजेक्ट टीम की कभी कभी होती। बहुत से ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ सर मैं, ओके कि उनमें मीटिंग भी होती थी, वीडियो कॉलिंग होती थी, या उनके कुछ क्राइटेरिया होते थे, वो सारे फिलफिल करके फिर उनकी वाइट लिस्टिंग वही कैंडिडेट्स को बाय करने का मौका मिलता था। तो ये चीज को भी हमारे नजर में थी कि ये चीज नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज को मद्देनजर रख के जो है ये कम्युनिटास प्रोजेक्ट बनाए सर। मतलब जितने भी लूप होल्स थे जो आपको प्रीवियस प्रोजेक्ट में मिले थे वो सारे के सारे आपने कम्युनिटास के अंदर कवर करे हैं ताकि यूज़र एकदम आए और बस। जी सर, लॉन्च पैड की जो मार्केट है उसको हमने इजी करने की कोशिश की है, उसको यूजर्स के लिए भी इजी करने के लिए, और जो लॉन्च पैड के नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी आसानी, उनके लिए भी एक गाइडेंस देने का, उनकी मार्केटिंग में उनको सपोर्ट करने का, उनकी ऑडिटिंग के लिए सपोर्ट करने का, इस तरीके से यहाँ पे इनको सपोर्ट करना, और यूजर्स को यहाँ पे जो है उनके लिए जो है बड़े एक मास को जो है खरीदने के लिए, वो करने के लिए हमने जो है ये लॉन्च पैड जो है तैयार किया है। ओके, तो बहुत सारी अच्छी बातें जो इसमें यूज़र्स के लिए रहेंगी और यूज़र कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट उठा सकते हैं क्योंकि अब उनको बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लॉकिंग या उसके डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वो भी छोटे अमाउंट से। क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू यहीं पे आता था कि बहुत सारे, क्योंकि नए लोग हमेशा एक छोटा अमाउंट से ही ट्राई करना चाहते हैं कि चलिए एक छोटा सा रिस्क भी लेके देख लेते हैं, तो वो चीज़ें हैं। Okay, so Robbie, we come on a last question, and it is a very important question because every project will promise many things, but the important thing is the security. So, what is your status about your, we can say that your auditing process, and what's the security mechanism you provide so the investor will feel safe in your ecosystem, you're on your launchpad? Okay. So first of all, we have passed our full smart contract audit by a company named TechRate, and the detailed reports can be downloaded in our docs, Okay. kommunitas.net/audit/TechRate. And also to ensure a high level of security, we have also on board Mr. Sohail Masasi as our security advisor. Mr. Sohail Masasi has many years of experience in the smart contract security fields, and currently he works as a CEO of Shellboxes and offensive security engineer at Halborn. So Okay. yeah, he is quite expert in this security things, especially in the blockchain and the smart contract. So you guys also can check his LinkedIn. It is in our website, and also for our staking smart contract. Before we roll the staking function, we have also the smart contract audited by the Shellboxes, and the audit file also can be downloaded in our docs.kommunitas.net/audit. Okay, it's great. Okay, Kamar जी. Thank you. जी. यस सर, ऑडिटिंग की जहां तक बात आती है, सबसे बेस्ट ऑडिटिंग और सबसे अच्छी रिपोर्ट जो है, ये मैंने जो अभी हाल फिलहाल मैंने प्रोजेक्ट से कुछ न कुछ कमेंट्स तो होते ही है हर ऑडिट में, हर प्रोजेक्ट के उसमें एक दो कमेंट्स होते हैं, आप खुद भी देखेंगे सर। तो इनकी बड़ी बढ़िया सी कम्युनिटास की ऑडिटिंग रिपोर्ट, टेकरेट अच्छी कंपनी है, उनके जरिए टेकरेट से ऑडिटिंग हुई है। दूसरी चीज सोहेल मसासी का, जैसे सर ने भी बताया कि शेल बॉक्स के ऑलरेडी ये इनकी खुद की कंपनी है, ये हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, तो उन्होंने भी इसकी डबल ऑडिटिंग हो गई है, समझ लीजिए उन्होंने भी इसको ऑडिटिंग किया हुआ है। तो ऑफिस एक तो वो हो गई जिसको हमने, यानी टेकरेट की, वो तो थर्ड हो गई। सोहेल मसासी तो ऑलरेडी हमारी टीम में आ गए हैं, तो ये ऑडिटिंग की बात हो गई सर। ओके, तो मैं और जहाँ तक टोकन्स की बात है सर, जी, टोकन्स की बात है, सारे टोकन्स और टोकोनॉमिक्स में जाके वेबसाइट पे, कम्युनिटास की वेबसाइट पे जाके टोकोनॉमिक्स की सारे कुछ कहाँ कितना लॉक है, लिक्विडिटी में कितना लॉक है, टीम टोकन, वो सारा कुछ बिल्कुल ओपन है सर। ओके। एंड इसमें बस यही आता है कि आखिरकार जो टोकन्स जैसे स्टेक कर रहे हैं तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऑडिटिंग प्रोसेस तो हो ही गई है, इसके अलावा और कुछ लूप होल्स तो ना मिले, क्योंकि हमने देखा कि अभी के टाइम में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैक हो गए थे इस टाइम पे, जैसे आप देख ही सकते ग्रीन फाइनेंस बहुत सारे थे, तो मतलब उनकी भी ऑडिटिंग है, बहुत सारी चीज़ें उसके बाद भी, तो उनका भी आपने ख्याल रखा है इस पॉइंट पे? जी सर, इसीलिए जो है यहाँ पे अभिमन्यु, मिस्टर अभिमन्यु, वो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, प्लस दूसरे जो है इनको ये सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से इनको प्रोजेक्ट टीम ने रखा हुआ है, ऑलरेडी ये सारी उन चीज़ों को जो है कवर करते रहते हैं।
ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू रॉबिन फॉर द होल डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट्स एंड द क्यूरीज विच यू सॉल्व ऑल दैट. So now the time for to select it our questions in from the chat, because people want to ask many questions about the project. So I will start with the two questions and then remaining you can select with in the chat. I will open the chat right now. Okay. We have a 8-minute time, so let's see who will. Okay, so I have a chat here. Let's see who will ask that thing. Guys प्लीज आप लोग #com लगा के यहाँ पे पूछ सकते हैं. ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है साहिर जी की तरफ से. कुमार जी, kindly send us the link at GitHub and tell us the use case of this. So Robin, do you have the GitHub link of your code which is open? Oh yeah, sure. So you can find all the links in the link tree. So I believe that I sent to you all the social media link. We have put all social media link in that link tree, even the GitHub. Okay, so you will give me, I will add in the video description so people will easily can access to that link of that. Okay, I will type in the chat. Okay, Yeah. let's take the another question. Yes, not right now, I will give after the video ended. Let's take the another question. It's from Soumya Das. What's the plan long-term business model for requirement and how the current integration effort contributing to it? Sorry, can you repeat again? What's the planned long-term business model for a request and how are the current integration effort contributing to it? Okay, so like I said, our business model is a launchpad. So basically, we are a launchpad. We didn't charge for a project to get listed on our launchpad, but we will only charge for the success fee. So let's say, like, if the project wants to get listed on the centralized exchange, then we can help the project to get listed there, and from there we will have some like reward or fee from the exchange itself. It is also the same thing when we go for the marketing and also for the audit. Yeah, so basically we work based on the success fee, and so the success fee is our business model. And how are the current integration efforts? Yeah, we are working on the launchpad. Hopefully that our launchpad will be done within the end of this month. There are several projects that wants to get listed with us currently, but like I said, we don't simply accept any project. We have this elite group where we will share the project that wants to get listed with us. So for the first project that wants to get listed with us, unfortunately the elite group refused or rejected because the project was not that good. So yeah, we are really community driven. Okay, that's very great. So this is the two questions from my side and we have only a 5-minute time left. So are you taking the another 3 questions? Yeah, I'm selecting it. Maybe I will take this Okay. 1 or 2 questions. Sir, this question is also good. Okay, Mr. Kamar, you can pick for me. This last question, Com is not having whitelisting, then how will it help launching projects? Okay, it is by Choti Ami, right? Yeah. Whitelisting is normally happens like we fill up the form, like our name and our information and how many we want to participate or we want to buy the project or the newly launched project. For us, we don't do that. As long as you have Com token and you stake it in our platform, then you will get the guarantee allocation. It means that you can buy or you can refuse to purchase, but the allocation will still be there for you. Just like BNB and Binance,
when you have BNB in Binance, if there's a launchpad, you can stake your Binance and you will get the allocation. There's no minimum amount of BNB that needs to be staked in the Binance launchpad. We want to be, we are aiming to be the second tier or second choice for the Binance. For a project to go to the Binance launchpad, I think it's almost impossible. 1 in 1,000, because their selection is very, very tough and hard. So yeah, this is what we are aiming to achieve. Okay, so another 2 questions. And Okay. wait a minute Robbie, I will tell a important thing. तो जिसकी भी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं वो अपने सर कुमार जी कौन सा एड्रेस हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं? मैटिक का मैटिक का मैटिक मेननेट से डाल सकते ओके, तो जो भी मैटिक के मेननेट के आपके एड्रेसेस है जिनके भी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट हुए वो इसी के नीचे ही कमेंट कर दें, बाद में मैं उनको पिकअप करके टीम तक कवर करवा दूंगा. Okay, so we have a 3 minutes left. Let's take a 3 important question and cover in 3 minutes. I think we have already selected 3. Then we will just select another 1 or 2. What about Okay. 1? Is that We take one more. Okay, we take 1 more. Sir, Pranjal sir, can you please just note down the people whose questions are selected? This video is already recorded, so no worry. I will do after the video ended. Okay, sir. Okay, so yeah. Let me check if I have one question. Let's go for a simple one. Yeah, it is by I think Umang Jalan. So it is Umang Jalan. He asked how to buy Com token and stake it. Okay. Yeah, Com token is listed on several centralized exchanges. The biggest one is Bitmart, XT, P2P, B2B, Dextrade, and IndoX. Okay, and also in the decentralized exchange like QuickSwap, ApeSwap, and every exchange information is there in the CoinMarketCap and CoinGecko. As for the staking, you can go to our website, which is www.kommunitas.net, and you can find the button there, earn 120% APY. It will go to our staking, the staking platform, and you also can do the yield farming with QuickSwap and with Polycrystal. Every information is there in our docs. Please visit our website and click on the docs. Okay, so on the screen I will share the exchanges where the token will be available on the different peers. Even that if you come on wait a minute, here on our website you will see the whole things like a swapping and staking program. It's on 120% APY. Yeah. Okay, so thank you very much Robin and Kumarji for the information about the project, and it's a great pleasure to meet with you, and thank you for giving the time and give the whole information about the project and solve the people query. So anything else you have to do? Thank you so much, 1 Mr. minute. Pranjal, Bye-bye. for inviting. Bye. Okay, thank you very much. So we'll end the live stream here.